MHA sets up inter-ministerial committee to probe into Rajiv Gandhi Foundation, Rajiv Gandhi Charitable Trust and Indira Gandhi Memorial Trust. Special Director Aide to head the committee. Uttar Pradesh Special Task Force kills aide of gangster Vikas Dubey involved in ambush in Kanpur last week, in which 8 cops were martyred. He is the third member of Vikas Dubey's gang to be killed in an encounter with UP police. Recovery rate in India from COVID-19 continues to improve, stands at 61.53%. Global tally of confirmed cases above 1 crore 17 lakh, with over 5 lakh 42,000 fatalities. Brazil's President Bolsonaro tests positive. WHO acknowledges evidence emerging of the airborne spread of the virus. Major setback for China. US FBI director calls on Beijing as biggest threat to national security to US, alleges Chinese state's shadow companies are not only a business threat but also endanger health and livelihood of people in the US. And international cricket resumes today after a gap of 117 days due to COVID-19 pandemic. England take on West Indies in the first test at Southampton. Jason Holder and Ben Stokes to lead teams in historic test. Hello and welcome to this edition of the news. I'm Rukma. In our top story, the Ministry of Home Affairs has set up an inter-ministerial committee to coordinate investigations into alleged violation of various legal provisions by the Rajiv Gandhi Foundation, the Rajiv Gandhi Charitable Trust and Indira Gandhi Memorial Trust. These investigations are into alleged violation of legal provisions, including the Prevention of Money Laundering Act, Income Tax Act and the Foreign Contribution Regulation Act. A special director of the Enforcement Directorate, Aide, will head the committee. And it's a major breakthrough for security forces. The Uttar Pradesh Special Task Force on Wednesday killed an aide of gangster Vikas Dubey involved in an ambush in Kanpur last week, in which 8 policemen were killed. He is the third member of Vikas Dubey's gang to be killed in an encounter with the police. Police have named 21 people in the FIR registered after the attack. The FIR also mentioned 50 to 60 unidentified people. Earlier, the Kanpur police had released the photos of 15 criminals, including Amar Dubey, who was said to be close to Vikas Dubey. Cash reward for the arrest on gangster Vikas Dubey has been increased to 5 lakh rupees. The security forces are able to nab more aides of Vikas Dubey. His aide Amar Dubey was killed by the Special Task Force of the UP police, and as the manhunt continues. में नामित और वांछित तथा 50,000 का इनामी बदमाश आज सुबह हमीरपुर जिले के थाना मौदहा अंतर्गत एसटीएफ और स्थानीय पुलिस के संयुक्त मुठभेड़ में मारा गया, जिसकी पहचान अमर दुबे पुत्र संजीव दुबे गांव निवासी बिकरू थाना चौबेपुर जनपद कानपुर नगर के रूप में हुई। इसी क्रम में बीती रात एक अन्य अपराधी 50,000 का इनामिया श्यामू वाजपेयी, जो कि उस एफआईआर में नामजद है, तथा जहान यादव
ये भी नामजद अभियुक्त है तथा एक अन्य अभियुक्त संजू दुबे को कानपुर नगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। Finance Minister Nirmala Sitharaman acknowledged the Cabinet's decision on extension of Garib Kalyan Anna Yojana till the end of November. In a tweet, the Finance Minister said, and I quote, "The Cabinet under the leadership of PMO India and Prime Minister Narendra Modi gave approval for PM Garib Kalyan Anna Yojana up to end November. 81 crore 9 lakh people would rightly get free food grains, 5 kg per person for 8 continuous months." Joining us with more details is our correspondent. Shailendra Mishra. Shailendra, what can you tell us about this latest development? The extension of the Garib Kalyan Yojana has been welcomed by all sections of society, by the beneficiaries most of all. And well, how is it panning out? सीधे तौर पर फायदा देने वाली जो योजना है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, उसको बढ़ाने का 5 महीने और बढ़ाने का ऐलान खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। और आज जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें इसको मंजूरी दी गई है। यानी एक तरह से हम जानते हैं कि जो मुफ्त अनाज 5 किलो प्रति व्यक्ति दिया जा रहा है वो 8 महीने तक दिया जाएगा। अप्रैल में इस योजना की शुरुआत हुई थी, जिससे बहुत बड़ी राहत जो कोरोना संकट के दौरान तमाम जो गरीब परिवार है, जो जरूरतमंद है, उनको मिली थी। और हम जानते हैं कि उसका औपचारिक तौर पर ऐलान किया गया था कि 5 महीने इस योजना को और आगे बढ़ाया जाएगा। और आज कैबिनेट ने इसको मंजूरी दी है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी भी दी है कि 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को सीधे तौर पर फायदा होगा। इस योजना के तहत 5 किलो अनाज मुफ्त दिया जा रहा है। ये अनाज दरअसल जो पीडीएस के तहत जो सस्ते दर पर जो अनाज दिया जाता है गरीबों को या फिर कार्ड धारकों को, उससे अतिरिक्त होता है बिल्कुल मुफ्त। तो आप ये समझ सकते हैं कि एक तरह से ये अतिरिक्त राहत मुफ्त अनाज की 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को अगले 5 महीने और मिलने वाली है, नवंबर के अंत तक, त्योहारों के समय तक। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी राहत जिसका खुद ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था देश के नाम अपने संबोधन में। और साथ ही साथ आज कैबिनेट की बैठक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई उसमें इस योजना को 5 महीने बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई। यानी अब अप्रैल से देखें तो 8 महीने तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा लोगों को। 81 करोड़ से ज्यादा लोगों को 5 किलो प्रति व्यक्ति मुफ्त अनाज से बहुत बड़ी राहत है जो इस तरह से आज इसको आज मंजूरी दी गई है कैबिनेट की बैठक। Right, thank you very much, Shailendra, for joining us there and for those inputs. And the Finance Minister, as we were telling you, acknowledged the Cabinet's decision on extension of Garib Kalyan Anna Yojana till end of November. In a tweet, she said, I quote, "The Cabinet under the leadership of PMO India and Prime Minister Narendra Modi gave approval for extending PM Garib Kalyan Anna Yojana up to end November. 81 crore 9 lakh people would rightly get free food grains, 5 kg per person for 8 continuous months." Right, and Shailendra was telling us about various details, the cabinet giving its approval. Well, Shailendra, you were telling us about the various benefits of the extension of the Garib Kalyan Anna Yojana is to bring to people. The Finance Minister today tweeting about how it means 5 kg per person for 8 more months. What more can you tell us about how this scheme has been progressing so far? जी, हम जानते हैं कि दरअसल पीडीएस के जरिए जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है उसके तहत जो 81 करोड़ लोगों से अधिक को जो अनाज दिया जाता है, उसके तहत अंत्योदय वालों योजना के तहत 35 किलो अनाज प्रति परिवार मिलता है, जबकि 25 किलो अनाज 5 व्यक्ति तक प्रति परिवार मिलता है सस्ते दर पर। लेकिन जब कोरोना संकट आया और ऐसे में इस बात की जरूरत महसूस की गई कि मुफ्त अनाज दिए जाने की जरूरत है, और इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद किया और एक बहुत बड़े राहत के तौर पर इस योजना को देखा गया और बहुत एक तरह से सफलता रही है। बहुत उसका फीडबैक
बेहतर आया है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री ने खुद इस बात का ऐलान किया कि 5 महीने के लिए इस योजना को, पीएम गरीब कल्याण योजना को आगे बढ़ाया जाएगा, यानी नवंबर के अंत तक ये मुफ्त अनाज 81 करोड़ से अधिक लोगों को मिलता रहेगा 5 किलो प्रति व्यक्ति, तो एक बहुत बड़े राहत के तौर पर लिया गया उन जरूरतमंदों को, गरीब परिवारों को, जिन्हें ये मुफ्त अनाज, पीडीएस का जो अनाज मिलता है सस्ते दर पर, उसके अतिरिक्त मिलता रहेगा। तो ऐसे में आज इस योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूर किया जाना निश्चित तौर पर एक बहुत, एक तरह से कहें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस बात का ऐलान किया था, लगातार 8 महीने तक गरीबों को, जरूरतमंदों को अनाज मुफ्त मिलता रहेगा नवंबर के अंत तक। और एक बहुत महत्वपूर्ण आज ये कैबिनेट में मंजूरी इस योजना को दी गई है, इसको आगे बढ़ाने की, तो निश्चित तौर पर बहुत अहम है। हम जानते हैं कि आज की कैबिनेट की बैठक में कई अन्य अहम मुद्दों पर भी विचार किया गया। जो जानकारी मिली, इसकी औपचारिक तौर पर जानकारी 3:30 बजे सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसको औपचारिक तौर पर इस बात की जानकारी दी जाएगी कि इस अहम योजना के तहत और विस्तार से जो कुछ जानकारी प्रेस को दी जानी है उसके जरिए पता चलेगा। लेकिन साथ ही साथ कहा जा रहा है कि कई अन्य अहम मुद्दों पर भी आज जो कैबिनेट में जो चर्चा हुई है, जो फैसला लिए गए हैं, उसकी भी औपचारिक तौर पर जानकारी 3:30 बजे मिलेगी। तो निश्चित तौर पर एक बहुत अहम महत्वपूर्ण फैसला, जिसकी ट्वीट कर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जिस बात की जानकारी दी है कि आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम अपने संबोधन में किया था। और इसके साथ ही साथ इंतजार करना होगा 3:30 बजे का, जब तमाम अन्य अहम मुद्दों पर कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी जाएगी। Right, Shailendra, closely associated with this scheme, the Garib Kalyan Anna Yojana, is the One Nation, One Ration Card scheme that the government has initiated, and we believe that it will be coming into force. It is coming into force. So how does that feature, we believe it's to be a major boost in this direction? जी, निश्चित तौर पर इस बात की जरूरत महसूस की जाती रही थी कि काफी जो मजदूर हैं, जो प्रवासी हैं, वो अपने जगह से दूसरी जगह पर जाकर नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तो ऐसे में उनको भी ये एक लाभ मिले। यानी अगर कोई बिहार का मजदूर है, वो महाराष्ट्र में नौकरी करता है, तो उसे भी वहां पर इस योजना का लाभ मिले, सस्ते दर पर अनाज मिलता रहे। इसके लिए वन नेशन वन कार्ड की एक योजना शुरू की गई थी। तमाम राज्यों ने इस योजना को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ने की ओर कदम बढ़ा दिया, और अब ये कह सकते हैं कि जल्दी पूरे देश में ये योजना पूरे देश में एक साकार रूप ले लेगी। और एक बहुत महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना पूर्व मंत्रालय की तरफ से जिसकी पहल की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में, जिससे देश भर में कहीं भी अनाज हासिल किया जा सकेगा। तो निश्चित तौर पर उस दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम सरकार ने उठाया है। और साथ ही साथ हम जानते हैं कि इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की गई कि अगर किसी के पास कार्ड नहीं है तो भी उसे इस संकट काल के दौरान अनाज मुहैया हो, अनाज मिलता रहे। उसके लिए केंद्र सरकार ने दिशा निर्देश दिए, राज्यों ने सुनिश्चित करने की कोशिश की कि कोई भी जो जरूरतमंद है उसे अनाज मिले, इस बात को सुनिश्चित किया गया। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़े राहत के तौर पर इस योजना को देखा जा रहा है। जब सरकार ने सुनिश्चित किया है, एफसीआई ने देश के कोने कोने में अनाज पहुंचाया है, जिससे जरूरतमंदों को न केवल पीडीएस का सस्ते दर पर अनाज मिलता रहे, बल्कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जिसका ऐलान किया गया था, जिसको विस्तार करने का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से कुछ दिन पहले देश के नाम अपने संबोधन में किया था, उसको आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। तो निश्चित तौर पर एक बहुत एक तरह से राहत की बात है उन जरूरतमंदों के लिए, गरीबों के लिए, जिनके लिए इस योजना का ऐलान किया गया था। क्योंकि 81 करोड़ से भी ज्यादा लोग हैं जो सीधे तौर पर जिनको इसका फायदा मिलने वाला है। और ये संख्या ही अपने आप में बताती है कि कितनी बड़ी योजना है, जिसके तहत एक तरह से राज्यों के सहयोग के साथ, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग के साथ इस काम को पूरा किया जा रहा है, जिसमें हम जानते हैं कि 1 किलो दाल देने की भी जो योजना है उसको आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक तरह से कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत पीडीएस के जरिए गरीबों को अनाज दिया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर इसका बहुत लाभ मिलने वाला। Right, Shailendra, thank you so much, and you keep your eyes on that story. We'll be back with you later in the day for more. And as a political storm exploded in Kerala over allegations raised against his office in the gold smuggling case, Chief Minister Pinarayi Vijayan on Tuesday said it was up to the centre to decide which agency should probe the matter. Soumya, wife of alleged business partner Swapna Suresh, is being questioned in the customs office in Cochin.
Swapna Suresh is also one of the main accused in the case. Unconfirmed reports say that the CBI may take it over. The unscrupulous Chinese cyber activity is increasingly finding opposing voices across the globe. In a latest decry against China, US FBI director has called China as the biggest threat to national security to the US. He alleged that the Chinese state's shadow companies are not only a business threat, but also endanger the health and livelihood of people in the United States. It's the people of the United States who are the victims of what amounts to Chinese theft on a scale so massive that it represents one of the largest transfers of wealth in human history. If you're an American adult, it is more likely than not that China has stolen your personal data. In 2017, the Chinese military conspired to hack Equifax and made off with the sensitive personal information of 150 million Americans. We've now reached the point where the FBI is opening a new China-related counterintelligence case about every 10 hours. Of the nearly 5,000 active FBI counterintelligence cases currently underway across the country, almost half are all related to China. And in an exclusive conversation with DD India, cardiologist and eminent public health expert Dr. Krishna Reddy shared the inside story of the development of India's first indigenous cardiac stent, the Kalam Raju stent. Dr. Reddy was the principal investigator in the development of the stent. Listen in to the Lagan moment during its development. We were at Nizam's Institute of Medical Sciences in Hyderabad when Dr. Kalam actually visited to see one of his colleagues admitted there. And typical of Kalam, I mean, he just during the casual discussion, he said, why are we still dependent on imported drugs and imported devices? So that small talk led to formation of a Society for Biomedical Technology with participation from the Council for Scientific Industrial Research and the Defense Research Development Organization, for which Dr. Kalam was the head at that point of time, and the Nizam's Institute of Medical Sciences team. So we started this project with that stimulating comment that we have to be self-reliant. And I think it resonates with the current slogan, the Atmanirbhar. It was a challenging experience, but when we completed the development of the stent and successfully demonstrated that it is safe and effective in 100, the first-in-man study across 10 hospitals in the country, we had that Lagan moment. I mean, we had absolutely inexperienced people, but were able to come up and compete with one of the best and the most challenging technology in medical devices. As the world looks for COVID-19 pandemic solutions, Dr. Krishna Reddy shared his views on how India can contribute to the quest for solutions. One of the great development that happened is most of the public R&D units, including the Council for Scientific Industrial Research and the Defense Research, they have been opened up for the public-private partnership to jointly work on the development of the vaccines and the drugs. And most of our capacity has been already partnering with some of the global universities, including the Oxford University, wherein we will be in a position to manufacture to meet the needs of the public. So we have already ramped up the capacity even before we had evidence that this vaccine is going to work. So I think we are sitting pretty in terms of able to manufacture as and when a proven vaccine is ready for manufacturing. Definitely we will be in a position to meet our own requirements, but also I think we may be able to meet some of the underserved areas like Africa and South Asia and other Asian countries as well. And you can watch the full interview with Dr. N. Krishna Reddy today at 5:30 p.m. on DD News and 8 p.m. on DD India. International cricket is set to resume after a break of nearly 4 months. The sound of the leather brushing the middle of the willow is all set to be heard again as England take on the West Indies in what promises to be a historic 3-test series from Wednesday. The two teams will be in action in front of empty stands at the Age's
Bowl in Southampton, as sport-deprived cricket fans are expected to tune in from across the globe. England will be without services of skipper Joe Root for the first test, who is with his wife as the couple are expecting their second child. England and the West Indies boards have ticked the right boxes so far in making arrangements for the test series while keeping the safety and health of the players and other stakeholders as a priority. A successful series between England and West Indies will certainly boost the hopes of other cricket-playing nations to consider resuming activities. Already Pakistan have arrived in the UK and are scheduled to play 3 tests and 3 T20s in August to September. England will also play 3 ODIs against Ireland before the Pakistan series. The winner will be if the England-West Indies series goes ahead as planned without major disruptions. India and the World Bank signed a loan agreement worth $400 million to enhance support for the Namami Gange program, which seeks to rejuvenate the Ganga. The project is aimed at stemming river pollution and strengthening management of the river basin, which is home to more than 50 crore people. Let's take a look at this report. The World Bank has once again appreciated the Namami Gange project, following which World Bank and Government of India has signed an agreement which will provide a loan amount of $400 million to enhance support for rejuvenating the Ganga. The credit amount will last till 2026. The agreement was signed by Samir Kumar Khare, Additional Secretary, Department of Economic Affairs, and Kaisar Khan, Acting Country Director on behalf of the World Bank. First National Ganga River Basin project focused on cleanliness, while the second National Ganga River Basin project will help stem pollution in the tributaries of Ganga. Also, a sewage treatment plant with a capacity of 482 million litres per day would be created. वर्ल्ड बैंक के जो गंगा 2 है, जो सेकेंड फेज वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट का है, उसमें भी ट्रिब्यूटरीज में भी काम हो सकता है. मेन स्टेम पे तो काम चलता ही रहेगा. An amount of $150 million would also be utilized for 3 new hybrid annuity projects in Agra, Meerut and Saharanpur over the tributaries of Ganga, Yamuna and Kali. Further, $160 million will be provided for 3 different projects in West Bengal and Bihar, while $71 million will be used for various other activities. World Bank has also guaranteed $19 million as a payment security mechanism, under which IBRD guarantee program has been launched for the management of the river basin more effectively. जो इन्वेस्टर है उसको इस गारंटी प्रोग्राम से बड़ी मदद मिलेगी और उसके रिस्क कम होंगे, और इसीलिए हमने इसमें IBRD गारंटी प्रोग्राम है जो कि वेस्ट वाटर सेक्टर में पहली बार हो रहा है और वो नमामि गंगे प्रोजेक्ट में वर्ल्ड बैंक की सहायता से किया जा रहा है. इसके अलावा जो IBRD गारंटी प्रोग्राम है वो वाटर सेक्टर में पहली बार इंडिया में किया जा रहा है. Notably, under the National Ganga River Basin Project 1, 34 projects were started worth $600 million. The River Basin project at Rishikesh, Prayagraj, Kanpur, Patna and other 11 projects have been completed, while the work is going on other projects. With inputs from Chandrasekhar, Bureau Report, DD India. And that's all in this edition of the news. Namaskar.